Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Respected listeners, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसका लिक्विड वाले पोर्शन का दूसरा लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो वेपर प्रेशर को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 पे है वेपर प्रेशर, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है वेपर प्रेशर की। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ द लिक्विड, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसके बाद है टेम्परेचर, एंड एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलेशनशिप ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद द टेम्परेचर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। डियर लिसनर्स, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम लिक्विड स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की। गैस वाले पोर्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, जिसमें हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। उसके बाद चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज जो थी लिक्विड की वो देखी थी, जिसमें हमने उसका जो है वो एवेपोरेशन को देखा था। अब वेपोरेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है वेपर प्रेशर का, कि जब वेपर्स बन जाते हैं एवेपोरेशन के दौरान तो वो वेपर्स जो होते हैं लिक्विड के वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो लिक्विड वेपर्स स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अभी जो है हम इसकी वर्डिंग के ऊपर जा रहे हैं। The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at particular temperature is called vapor pressure of the liquid. Students, हमने जो ऑलरेडी बात की थी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। दिस कंटिन्यूअस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। नाउ on the basis of the random motion the molecules collide with one another. Molecules when collides with one another, it's mean their kinetic energy will increase. It's mean the kinetic energy of the molecule will increase. When the kinetic energy of the molecule will increase, it's mean it cause to increase the temperature. And with the increase of the kinetic energy, the intermolecular distance between the molecules become more and more. So with the increase of the intermolecular distance between the molecules, the intermolecular forces become weak and weak. So on this base the molecules get vaporized, or molecules evaporate from the surface of the liquid, that is called evaporation, and these molecules exert pressure, and this pressure of the vapors is called vapor pressure. जब हम vapor pressure की बात करेंगे, these are two different processes that liquid converted into the vapors or vapors converted into the liquid. These are two different processes. Both have the same magnitude but they are opposite in direction. When the liquid is converted into the vapors, it is called vaporization. Its pressure is called vapor pressure. But when the vapors turn back to the liquid, it is called condensation. अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। The equilibrium is a state when the rate of the vaporization and the rate of the condensation is equal to each other but opposite in direction. This state is basically called the equilibrium. Now we are going toward the explanation. Respected students, हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर एक ओपन वेसल हो तो उसमें क्या होगा कि रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक हो जाएंगी और मॉलिक्यूल जो होंगे वो वहां से एवेपोरेट हो जाएंगे या उनकी वेपोराइजेशन हो जाएगी। ठीक हो गया बात। अगर उसी बर्तन को या उसी सिस्टम को हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स या लिक्विड वेपर्स जो होते हैं वो आसा आसा इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो फिर वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें जो है वो वेपर्स जो है वो इकट्ठे होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं, वो कंडेंसेशन कहलाता है। अभी हम इसका मतलब ये हुआ कि
लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाएगा और उसका प्रेशर जो होगा वो वेपर प्रेशर होगा, और मॉलिक्यूल्स का दोबारा इकट्ठे होकर गैसियस स्टेट से या वेपर्स का दोबारा इकट्ठे होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना जो है वो कंडेंसेशन कहलाएगा, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड द मॉलिक्यूल वेपोरेट एंड मिक्स अप with the air, but when we close the system the evaporated molecules start gathering over the liquid surface. Initially the vapors condense slowly to return to the liquid. After some time condensation process increases and a stage reaches when the rate of the evaporation become equal to the rate of the condensation. At that stage the number of the molecules evaporated will become equal to the number of molecules come back mean condensed to the liquid. This state is called dynamic equilibrium. कहना क्या चाह रहा है कि लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, ये एक स्टेज है जिसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। उसके बाद जो वेपर से वो इकट्ठे होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो गए, ये कहलाती है कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा तो एक स्पेसिफिक एक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाएगा। दैट एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक एक्विलिब्रियम। अभी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। इसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। नंबर 1 था नेचर ऑफ द लिक्विड, नंबर 2 था साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 3 है टेम्परेचर। ये 3 चीज़ों को जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जब हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, लेट्स सी, it is very clear that liquids are of 2 types. One of them is called polar and others are called non-polar. As we are familiar that polar has both negative as well as positive charge, it means they have a strong intermolecular forces. But in the context of the non-polar liquids, they have not strong intermolecular forces. अभी हमने 2 बातें की हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, उनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों होता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और यही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं उनको जल्दी एवेपोरेट नहीं होने देती और इनका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। जब हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स की, तो उनके ऊपर जो है वो अपोजिट चार्जेस नहीं होते या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अब जब सेम चार्जेस होंगे नॉन पोलर की सूरत हाल में, इसका मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी। यही रीजन होगी कि जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कम होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होंगी तो वो बहुत जल्द एवेपोरेट कर जाएंगे, जब उनकी एवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है, एक पोलर और नॉन पोलर का है। जब पोलर की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और उनका रेट ऑफ वेपोरेशन जो है वो कम होगा। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलर लिक्विड के, जबकि नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो एवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन पोलर के। अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। Vapor pressure depends upon the nature of the liquids. Polar liquids have low vapor pressure because they have strong intermolecular forces due to the opposite charges. But the non-polar liquids have the same charges, so at the same temperature they have more rate of evaporation as compared to the polar molecules. This is the reason of the strong intermolecular forces between the polar molecules. Let's see the examples of the water and the alcohol. As we are familiar that alcohol have weaker intermolecular forces as compared to the water molecule, so the rate of the evaporation of the alcohol is more than the water at the same temperature. It's mean alcohol will vaporize more quickly as compared to the water at the same temperature due to the intermolecular forces are due to the strong intermolecular forces. Next is the size of the molecule. There are some molecules, those are with bigger size, and but some of them have the smaller size, and size of the molecule also depends upon the vapor pressure. We can say that
the bigger size molecules cannot evaporate easily due to the heavy mass or due to the heavy volume of the molecule. So we can say that कि वो मॉलिक्यूल जिनका साइज जो है वो बड़ा होता है उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम होता है, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है. It's mean we can say that the vapor pressure is inversely proportional to the size of the molecule. Respected students, we have already discussed that when the two traits or the two properties are directly proportional to one another, it's mean same changes happen on the both side. If one will increase, the other will also increase. If one will decrease, the other will also decrease. But in the context of the inversely proportional, when one property is increasing, the alternative or other property is decreased, or vice versa. We can say the example, or we can see the example of hexane and the decane. Hexane with 6 carbon as a smaller molecule with as compared to the decane which have 10 carbon atoms, right? So the smaller size molecules have more vapor pressure or rate of the evaporation as compared to the bigger size molecules. So hexane has a smaller molecule, so it has great vapor pressure or more vapor pressure as compared to the decane. Therefore the C6H14 evaporate rapidly as compared to the. Now we are going toward the third point, that is the temperature. Temperature is basically directly proportional to the kinetic energy, as we have already discussed in the vapor pressure or in the typical properties of the gas and typical properties of the liquid. So we can say temperature is directly proportional to the kinetic energy. As we increase the temperature, the kinetic energy will also increase. We have already discussed in the first slide of this lecture that temperature is directly proportional to the kinetic energy. It's mean with the increase of the temperature, the kinetic energy of the molecule will also increase. With the increase of the kinetic energy, the intermolecular distance among the molecules will also increase, and it goes to the wider and wider. With the increasing of the intermolecular distance, the intermolecular forces become weaker and weaker. So the rate of evaporation will also high as well as the vapor pressure. So we can say the wording, or we can see the wording about the temperature. At the high temperature, the vapor pressure is higher than at low temperature. At elevated temperature, the kinetic energy of the molecule increase enough to enable them to the vaporize and exert the pressure. The next we are going to see the relationship between the temperatures in degree centigrade and vapor pressure in mmHg. Basically we are taking the example of the water. At 0 degree centigrade, the vapor pressure of the water in mmHg will be 4.58, but when we increase the temperature from 0 to 20, the vapor pressure of the water will be 17.5. And in the third condition, when the temperature increase from 20 to 40, the vapor pressure of the liquid will also increase, that will be 55.3. In the fourth condition, when we increase the temperature from 40 degree centigrade to 60 degree centigrade, the vapor pressure of the liquid will also, that is water, will also increase from 55.3 mmHg to 149.4 mm of Hg. Again, in the fifth condition, we are increasing the temperature of the water from 60 to 80 degrees centigrade. It's mean the vapor pressure of the liquid will also increase, that is 355.1 mm of Hg. In the sixth and the last condition, when the temperature increase from 80 to 100 degrees centigrade, the vapor pressure of the liquid will also increase from 355.1 to 760 mm of Hg. In this table, we are seeing that we are regularly increasing the temperature of the water from 0 to 20, 20 to 40 and so on up to the 100 degrees centigrade. Similarly, in the other case, the vapor pressure of the liquid become higher and higher, that is 4.55, then 17.5 and so on, increasing regularly up to the 760.0. It's mean
It's very clear that the vapor pressure of the liquid, especially of the water, is directly proportional to the temperature. When we are increasing the temperature, the vapor pressure of the liquid will also increase. इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, जब हम केटल में चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर जब हम लिड या ढकना उसके ऊपर रखा होता है हमने, जब हम उसको हीट अप कर रहे होते हैं तो ऊपर से जो लिड या ढकना जो होता है वो केटल का वो मूव कर रहा होता है, वो जब वो थोड़ा वाइब्रेट कर रहा होता है वो ड्यू टू वेपर प्रेशर होता है। जैसे ही हम उसको उठाते हैं तो क्या होता है कि जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ और कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो फिर दोबारा उसका हिस्सा बन जाते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। डियर लिसनर्स, आप जो है वो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक चैनल बनाया है केमिस्ट्री के लिए, इसमें इंशाल्लाह हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम जो है इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस करने जा रहे हैं एक आध दिन तक कि हमने केमिस्ट्री का पेपर जो है वो कैसे सॉल्व करना है और उसके पोर्शंस क्या क्या होंगे, और हमने जो है वो पेपर में और बुक के पढ़ने में और बुक के पढ़ने में और पेपर के हल करने में क्या डिफरेंस है। हम पेपर को बुक के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे होते हैं जबकि हमने पेपर को पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे।